Hey everyone, good evening. I'm recording it at 12 o'clock. It's like 26th December now. So, Merry Christmas to everyone. And in this particular video, we'll be talking about the stocks which you can trade today, which is on Tuesday. तो आज आपको वो स्टॉक्स किसमें ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में ये वीडियो। तो मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी एनालाइज कर रखे हैं। तो पॉलीकैब हमारा एक स्टॉक है, ठीक है, जिसमें मार्केट फिलहाल इट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अभी देखो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, दो चीजें होंगी। इधर मार्केट विल टेक रीटेस्ट फ्रॉम हियर एंड इट कैन कम डाउन। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है कि जब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके वापस से जब नीचे आने लगेगा, तो बिलो दिस वी कैन प्लान वन ट्रेड फॉर सेलिंग साइड, जिसका पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। अगर ये हमारे सफिशिएंट रिस्क और रेशियो के लिए, देन वी कैन बुक आवर टारगेट। अदरवाइज अप टू हियर। इफ इन केस इफ दिस लेवल इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, अगर मार्केट सुबह में ही लाइक गैप डाउन ओपन हो गया, इफ इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर, then double confirmation के साथ you can look for buying side, or else above this also we can look for buying side, ठीक है। then we have apart from this we have other stocks as well, which is Metropolis. Metropolis अगर हम देखेंगे तो right now Metropolis, if you'll see in higher time frame, okay, in 1 hour time frame, if you'll see it has started moving towards upside, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ का ट्रेड प्लान किए हैं, बिकॉज मार्केट ने एक हाई लगाया है यहाँ से एंड इट हैज स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अगर कल के दिन का जो ये हाई है यहाँ पे, इफ इट इज गेटिंग ब्रोकन, देन वी कैन प्लान फॉर बाई साइड अप टू हियर। अदरवाइज इफ मार्केट इज रिवर्सिंग, अगर यहाँ से रिवर्स कर गया और एल्स यहाँ से, देन वी कैन प्लान फॉर अ सेलिंग ट्रेड अप टू ईयर। मुझे कोशिश करना चाहिए या तो यहाँ से आप जाओ, नहीं तो अगर मार्केट इफ डायरेक्टली गोज अप टू ईयर एंड इफ इट इज रिवर्सिंग, देन दैट कैन बी योर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेट्रोपोलिस। देन वी हैव पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो मार्केट हैज बीन मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या प्लान करा है कि अगर इफ दिस लेवल इज गेटिंग ब्रोकन, यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, देन वी हैव अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज दूसरा अपॉर्चुनिटी हमें सेलिंग के लिए, सॉरी बाइंग के लिए, वी कैन गेट इट ओनली अबव दिस लेवल। हम लोगों को इसके ऊपर ही मिल सकता है, बिकॉज दिस इज अ गुड रिजेक्शन लेवल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। Otherwise, the best opportunity for the buying will come only if the market is coming to this point, and if it starts reversing with double confirmation like W pattern form hota hai, then we can look for buying side, ठीक है। then we have LT। तो LT में अगर हम देखेंगे तो मार्केट हैज ऑलरेडी मेड अ डबल टॉप पैटर्न एज वेल, ठीक है। डबल टॉप भी फॉर्म हुआ है और कह सकते हो यहाँ पे डबल बॉटम भी हो चुका है, दोनों चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि वी कैन नॉट गो फॉर बाई साइड, बिकॉज इसके ऊपर बाइंग के लिए लुकअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट इज इन दिस रेंज। तो अंटिल दिस लेवल इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर बाइंग साइड। तो प्लान कैसा है कि अगर मार्केट इन केस इफ इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर, देन वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन ओपन हुआ, इसके नीचे जाता है डे लो के नीचे, प्रीवियस डे लो, देन वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड। अदरवाइज दूसरा क्या अपॉर्चुनिटी होगा कि इफ मार्केट कम्स टू दिस लेवल, इफ इट स्टार्ट रिवर्सिंग टुवर्ड्स अपसाइड, देन वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर स्टॉक विच इज विप्रो। तो विप्रो राइट नाउ इफ दिस लेवल, यस्टरडे जो ये स्विंग है, अगर ये ब्रेक करता है तो हमें टारगेट यहां तक लुकअप करना है, और इसकी और रेशियो अच्छा मिल गया, बुक कर सकते हो अपना प्रॉफिट। इफ दिस लेवल इज गेटिंग ब्रोकन, देन वी हैव टू लुक अप टू हियर। अदरवाइज दूसरा प्लान क्या है, दैट कि लेट्स से कि इफ मार्केट इज ब्रेकिंग दिस लेवल टुवर्ड्स अपसाइड विद कंफर्मेशन, देन वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड। अदरवाइज इफ मार्केट ओपन्स विद अ स्लाइटली गैप डाउन, एंड अगर आफ्टर दैट अगेन इफ मार्केट स्टार्ट्स रिवर्सिंग लाइक डबल कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लोग बाइंग के लिए लुकअप कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और स्टॉक्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इन विच यू कैन ट्रेड। आफ्टर दैट वी कैन ट्रेड इन सीमेंस एज वेल। अब सीमेंस का आपको एनालाइज करके मैं आपके सामने बताता हूँ। देखो राइट नाउ मार्केट हैज बीन मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। तो कैसे एनालाइज करते हैं, देखेंगे कि मार्केट कहां से रिजेक्शन ले रहा है। फर्स्ट रिजेक्ट, लास्ट रिजेक्शन जो है 3800 के आसपास है, फाइन, टुवर्ड्स द डाउन साइड। देन रीसेंट रिजेक्शन जो है मार्केट का यहाँ पे है, एंड आप ये कह सकते हो कि पूरा जो जोन, ये कंप्लीटली दिस पर्टिकुलर जोन इज गोइंग टू बी नॉन ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ रिजेक्शन जोन ओवर हियर। यहाँ पे हमारा अगला जोन है जहां पे हम लोगों को रिजेक्शन दिखे हैं। देन लेट्स कम डाउन टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, कि वी हैव अ स्मॉल रिजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस लेवल। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये पिछले दिन लाइक ऑन लास्ट दिस पर्टिकुलर फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, ठीक है, मार्केट यहां से आया, देन इट ट्राइड टू गो अप, बट मार्केट टुक रिजेक्शन फ्रॉम हियर, ठीक है। तो कल क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इफ मार्केट इज गोइंग टू दिस लेवल, अगर मार्केट यहां तक चला जाता है, ठीक है, एंड इफ इट इज रिवर्सिंग, देन वी कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी अप टू हियर, या फिर यहां तक भी आप देख सकते हो, अप टू 3900 वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड, ठीक है।
और एल्स क्योंकि यहाँ पे बाइंग के लिए क्या हो जाएगा कि बाय द टाइम विल गेट द कंफर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा देन यू कैन अवॉइड। इफ यू आर गेटिंग द गुड कंफर्मेशन, फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए, let's say here you are going for buying side and your stop loss is coming around this level, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा which you, if you are willing to take it up then you can go for it. First target you should place it around up to here 1:1.3 के आसपास, then final target you can place up to here, ठीक है। but this will be quite risky because market can take rejection from this particular level. Otherwise the best buying trade which can happen is that if market comes down to this level and if it is making double bottom pattern then we can look for buying side, at least up to here we can look for it, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा एक और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सी हमें कैसे एक्ट करना होता है, दिस इज ऑल आवर प्री प्लानिंग, ये सारा हमारा प्री प्लानिंग रहता है कि वेयर वी हैव टू टेक अप द ट्रेड। when the market opens it can open flat, it can open with a gap up, it can open with a gap down, right? So based on that we have to make our decision. So by 9:30 there will be a different plan, क्योंकि अगर मार्केट ओपन होता है तो हम क्या करते हैं कि व्हाट डू आई डू पर्सनली दैट कि आई प्लान इट अकॉर्डिंग टू इफ मार्केट इज ओपनिंग फ्लैट, इफ मार्केट इज ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन, तो उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान है। अगर गैप अप ओपन हो गया, इफ मार्केट गोज अप टू हियर, उसके बाद क्या कर सकते हैं, देन वी कैन प्लान फॉर द सेलिंग साइड लाइक दिस कि मार्केट यहां तक गया देन इट केम डाउन, सिमिलरली हो सकता है वैसा भी चीज हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी शुड नॉट बी रिजिड कि इफ आई हैव प्लान फॉर बाई साइड आई शुड बी गोइंग फॉर बाई, इवन दो अगर आपको सेलिंग के लिए देख रहा है फिर भी आप बाई के लिए ही जा रहे हो, तो वो चीज मत करो। ईदर टू थिंग्स यू शुड बी डूइंग इट, गो विद द फ्लो ऑफ द मार्केट फर्स्ट, otherwise you have built up a mindset that you want to go for buy side, so you should be waiting for the opportunity to go for the buy side। अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, and look for the buying side when the market is in uptrend, look for the selling side when the market is in downtrend, that should be the mentality। and I'll try to continue with the market analysis videos at least. Let's see. I do not know when the next video will come up, but just wanted to make it up. So that's all from my end, and I'll see you in next video whenever I'll be making it soon. By the way, one strategy I have made it up and which I'll be sending it to everyone for free. Okay, and that's a quite good strategy. So just simple demo I want to also show you by the end of this video. Okay, so this is a combination of obviously without price action nothing will work for anyone. So I'm going to use one super trend and one EMA I'm using it, which will help us in getting good trades. So this strategy is based on two things. So over here, this super trend is particularly helping me to get the stop loss, and combining these EMA and the super trend, I'll be getting the entry. So simple example if I'll have to give you. So let's say when this particular any green candle without any kind of a longer wicks, if it is crossing towards upside and the super trend is in green, then I can plan for my buy side. So you can see here, I'll have a planning for buy side. My stop loss will be completely based on this particular super trend. Okay, if it is turning into the red, I have to exit. So here you can see that here I have got 1:1.5. Previously, if you'll see, market started over here, but I have to wait for the candle to close below this. Okay, so generally, if I'll see the perfect entry which will be coming up is around here, it can be okay, or also we could have gone up to here. So here, if I'm going it, my stop loss will come around this level. Okay, and my entry, this is the confirmation that if this level should be getting broken, then only I'll get the target, right? So my target maximum up to here. You can continue your trade till the time the super trend is not turning into the opposite color. If it is in red, it has to turn into the green color. So if you'll see here, okay, up to 1:1.5, this strategy is working really well. Okay, and without price action, again, there is no strategy. Just remember that. So again, if you'll see here also, power grid. Okay, definitely there will be drawbacks also of this. So I'm working on the drawbacks as well. So you can see that here it started with the red. So at this point of time, with confirmation, because now we have to go for the trade. So here is my trade, and then stop loss will come around this level. Okay, target, where should I keep it up? Let's say obviously the target should be according to the previous low here, 1:1.4.5. I am getting it. Next, if I want to continue with this trade, till where I can continue? Till the time the super trend is not changing its color, I can continue. So you can see 1:1.13. We've got it. So I'm working on this. If this goes well, we'll make this proper strategy with the conditions key of when it is going to work, when it is not going to work, or if I have to make some changes. But to use this strategy, you should be knowing the basics price action, which is uh, obviously which is required. Okay. So that's all from today's class. I do not know when you'll be watching it, maybe today or by
tonight itself or by before morning, but do make sure to watch it out. Okay, so see you guys soon.